नीला आसमान, नीली वर्दी और नीला है दिल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्री मैच शो में आपका स्वागत है। और ये जो धूप मेरे चेहरे पे पड़ रही है, आज मैं बाहर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि पता लगा है कि कोलंबो में भी ऐसी ही धूप पड़ रही है। और बहुत ही सुनने में खुशी हुई आज जब सुबह सारे न्यूज चैनल्स देखे, यूट्यूब चैनल देखे, और फिर आज मैच हो सकता है। प्रीतम, आज मैच तो आ गया, एक्साइटमेंट बन चुकी है, पर सवाल ये है कि पाकिस्तान सेटल्ड है और हम सेटल्ड नहीं है, तो क्या पाकिस्तान एज लेके जा रहा है इस मैच में बिफोर द स्टार्ट? फर्स्टली वेलकम एवरीबॉडी जो लोग शो पे आए हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस आपका व्यूज क्या है। हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और बस 3 ही घंटे बचे हैं मैच का पहली बॉल होने में। डेफिनेटली 3 बजे स्टार्ट होगा। बारिश एकदम नहीं है, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन जो आपके सवाल है आर्यन की एज हम इंडिया पाकिस्तान में किसी को नहीं दे, ना ही हम बोलते कि हम लोग एज पे है, ना ही वो लोग एज पे है। इट्स ऑलवेज अ 50-50। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि पाकिस्तान बहुत ही सेटल्ड 11 से जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे डू, बट दे आर रियली गुड साइड। एक दिन पहले अभी वो लोग ट्रेंड बना के रखा है कि एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे, तो कल भी वो लोग प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है वो लोग का। सो इट्स द सेम प्लेइंग 11 जो पिछला मैच खेला था बांग्लादेश के साथ। सो हम लोग का थोड़ा इधर उधर बात है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से मेरे हिसाब से एक दो चेंज शायद आ सकती है, स्पेशली बुमराह, लेकिन वो बात की बात करेंगे। हाँ, नहीं मतलब बुमराह इज अ डेफिनेट, ही इज कमिंग इन, पर दैट मींस कि यू हैव टू काइंड ऑफ leave Mohammad Shami out at the moment, which might not be feasible according to me. But जैसा कि प्रेजेंटेशन दिख रही है, क्लैश ऑफ द टाइटंस ऑब्वियसली। आप अपने व्यूज बताइए। और प्रीतम, व्हाट डू वी हैव इन स्टोर? तो वी हैव द स्क्वाड्स, राइट? Yeah, फर्स्ट अप, सो so we स्क्वाड। हाँ प्रीतम, go on with the first line. yeah, so we have the squads out here. I don't think already half of the tournament has went by, so I don't think there will be any much changes in the squad. But फिर भी मेरा एक ही सवाल है कि इंडिया के तरफ आए। पाकिस्तान ऑलरेडी हैज अनाउंस्ड दे प्लेइंग 11। इंडिया के तरफ आए, आप क्या वो विकेट कीपिंग स्लॉट में कोई चेंज देखना चाहते हैं आर्यन? देखो, पर्सनली तो नहीं, पर सुनने में आ रहा कि होगा। केएल राहुल विल कम इन, विच इज बीइंग सेड। और आई थिंक विद दिस इंटरव्यू जो हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि इज कॉन्फिडेंट, सो इट्स गुड, इज कॉन्फिडेंट यार, वी विश हिम द बेस्ट। पर आई वुड रियली रियली फील फॉर ईशान किशन। सुनने में ये भी आ रहा था कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो जाएंगे, तो अब दिस इज अ फियास्को, और हमें 2:30 PM से बिल्कुल। पहले पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो I need to really wait. We all need to wait and see what happens, but respect the decision, whatever decision the management makes. या एब्सोल्युटली। एंड उसके हिसाब से श्रेयस अय्यर का बात आपने कही है कि श्रेयस अय्यर लुक वेरी गुड इन द लास्ट गेम। बहुत ही अच्छा था, ही वाज लुकिंग कंपोज, लेकिन सीधा हाथ पे दे दिया था एंड इट वाज अनदर वेरी गुड पुल शॉट। लेकिन बात आते हैं हम लोग के गेंदबाजी पे। इफ यू सी वी डू नॉट हैव मच ऑप्शंस। प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन एक्स्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड, संजू सैमसन हैज बीन साइडलाइंड एंड इवन तिलक वर्मा वर्ल्ड कप के पारी देखते हुए। सो आपको क्या लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पे जो है तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा, who are not part of the World Cup squad, will not even play a single game in this tournament going forward? Yes, yes. Forget Tilak Varma and Prasidh Krishna. I don't think Suryakumar Yadav will get a game in this tournament. And देखो, 9 प्लेयर तो वी आर पिकिंग हैंड पिक्ड। अगर वो हमारे सोसाइटी में जो वॉचमैन है, मैं उसको बोलूं कि इंडिया के 9 प्लेयर बता दे, तो वो भी बता देगा। 9 का तो पक्का है, पर इट्स फ्यू स्पॉट्स। नंबर 1, नंबर 8 पे कौन, और नंबर 2 यही कि कीपर कौन नहीं। तो सवाल वहां पे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल एकदम वहां पे हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन आगे चलते हैं। आपने तो इंट्रोडक्शन में इस बात की कही है कि ये लाइव पिक्चर्स है। ये आज की सुबह 10 बजे 11 बजे की है। लेफ्ट हैंड साइड सुबह के 10 बजे है, होटल रूम से कोई ने खींच के दिया है कि एकदम बादल एकदम बहुत ही अच्छे है। बारिश का कोई सीन तो अभी फिलहाल नहीं देखने जा रहे कि ये राइट हैंड साइड के 11:30 बजे कोलंबो के स्ट्रेट फॉरवर्ड से बारिश। हमको हम लोग को तो स्काई तो एकदम क्लियर लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे को खबर मिली है कि कल के पिच यूज नहीं होगा, कोई दूसरा पिच हाँ, होगा। लेकिन
आप ये बताइए कि जो आपको कल के मैच में देखने को मिला, ये प्रेमदासा स्टेडियम का खासियत क्या है? विन द टॉस बैट फर्स्ट और विन द टॉस एंड चेज? यार विन द टॉस, आई थिंक बैट फर्स्ट। प्रेमदासा जो पहले खेता रामा जिसे हम कहते थे, स्पिन एडेड पिच था, और कल जो मैच हुआ है टिपिकल आर प्रेमदासा। और जितने भी हम प्रीव्यू शोज करते आ रहे हैं, हमने आपको बताया 250 विनिंग स्कोर होता है। कल आप स्कोर देख लीजिए क्या था, बिल्कुल। 255, और दैट इज द विनिंग स्कोर ऑन दिस ग्राउंड। अब मुझे ये नहीं पता कि जो आज नई पिच यूज होने वाली है उसमें कितना टर्न है। हाँ, आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि कंडीशंस चैलेंजिंग होंगे, चाहे इंडिया बैटिंग करे पहले, चाहे पाकिस्तान बैटिंग करे। ओपनिंग बैट्समैन विल फेस चैलेंज, बट देखा जाए तो केतारामा, you win the toss, and generally what you do is you win the toss as Ketarama and you bat first. And even if it's a India Pakistan, and the pressure also adds, so win the toss and bat first. For me, what are your thoughts? If the captain wins the toss, what he's going to do? आई वुड डेफिनेटली बैट फर्स्ट विदाउट अ डाउट। कल जैसे बांग्लादेश ने टॉस जीत के गेंदबाजी किया, आई थॉट दे लॉस्ट द गेम एट दैट मोमेंट इटसेल्फ, बिकॉज वो लोग का खासियत है स्पिन bowling and they have so many spinners. They added an extra spinner to the playing 11 as well, and then after that Uh, you're winning the toss and bowling first. And in the toss you said that we would have bowled first just because of the rain, so you cannot rely on something which is not in your hands. So that मेरे हिसाब से तो एकदम पुअर डिसीजन था। आज अगर ऐसे मौसम पे आप टॉस जीतेंगे तो जरूर बैटिंग कीजिए, 270 275 प्लस कीजिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में तो ये सब स्कोर 250 प्लस, आपके साथ मैं एकदम सहमत हूँ। 250 प्लस इज अ वेरी हाई वोल्टेज स्कोर। वो एडिशनली चेजिंग टीम के प्रेशर आ जाए। सो आई थिंक विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट इज नो डाउट डेफिनेट चॉइस। लेकिन बात करते पिच का, आर्यन, कल जैसे श्रीलंका हैज प्लेड विद टू जेन्युइन स्पिनर्स, दोनों बहुत ही अच्छा गेंदबाजी किया। बांग्लादेश ऑन द uh, अदर साइड प्ले थ्री स्पिनर्स एंड ऑल थ्री ऑफ देम बोल्ड रियली वेल। इंडिया का कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो कुलदीप और जड्डू डेफिनेट है। आप क्या दोनों, जैसे पाकिस्तान ने सिर्फ शादाब खान को खिलाए प्लेइंग 11 में है, उसके साथ इफ्तिकार और आगा सलमान है, सो आपके हिसाब से क्या स्पिन ज्यादा देखने को मिलेंगे मिडिल ओवर्स मोड ओवर्स पे, कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑपोजिशन? आई थिंक पाकिस्तान का ये एक कॉन्शियस एफर्ट है इस प्लेइंग 11 के साथ कि बीच में फहीम को कराई जाए, और फहीम अपना मिडिल ओवर विकेट टेकर है। हाँ, इंडिया एक चीज कर सकता है, इफ्तिकार को सेटल नहीं होने देना आपने, क्योंकि जो बांग्लादेश का मैच था पहला सुपर फोर का, उसमें उन्होंने इफ्तिकार को बॉल डालने दे दिया। अगर आप इफ्तिकार वाला प्लान डिफ्यूज कर दो, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं रह जाएंगे, उन्हें अपने पेसर लाने पड़ेंगे। पर वो उन पेसरों को पहले 10-15 ओवर में कैसे फेस करती है इंडिया, that will run Babar Azam's strategy. If Babar Azam does not get wickets with them, he will be forced to change his strategy. Otherwise, it's a pretty plain strategy for Pakistan. Attack with the pacers up front. If they get wickets, continue and get even Iftikhar to bowl a few overs, because he's a good bowler. He's not a part timer per se. He can bowl decently, but if you can take Yep. them out, then Pakistan change their plan. So Indian batting top four need to stick around, and we can't afford another top order collapse today. Ekdam, and top order collapses cannot be taken into consideration because it's we understand it was the same conditions we played last game, but still, it's a high voltage game. It's a super force. We have to kickstart the tournament with a victory. But weather की बात करें तो one of the fans has said that it looks pretty sunny, but Hmm. वेदर एप्स सेज अदरवाइज। सो वेदर एप्स पे तो हम लोग का तो गूगल आज चलने ही वाला है, वेदर कैसा है आज का दिन, आज का दिन। फिर भी in case that it is pretty cloudy by the toss time, if there's any overcast conditions, do you change your mind opting to bowl first? Maybe because you even this weather around teams prefer to chase, और एक कृष्णा गोपाल का सवाल आया, किशन और केएल राहुल, व्हाट डू यू थिंक, who will play? Both are not playing. If both play, that means Shreyas Iyer is dropped, which will be which will create a fiasco on social media. Basically, that's what will happen if Shreyas Iyer is dropped. It will be create a harakiri. So Krishna, both are not playing this game. I feel that although Kishan should play, KL Rahul will get the nod.
That's a very controversy. But if KL Rahul gets a nod ahead of Ishan Kishan, then that will also create a controversy. No matter what, it will definitely create a controversy in It's Twitter. it's 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 Indian cricket, guys. At the end of the It day, will it definitely doesn't. happen. It definitely happened. But यहाँ पे हम लोग प्रेमदासा स्टेडियम का बात करें, स्टैट्स देखे तो as we said before looking into the stats as well, win the toss, bat first. 76 times the team has won batting first, and 55 the team has won chasing. So कल जैसे हम लोग कल की बात करें, both the teams, I would definitely say that both the teams are looking into the game very closely. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शना का कैप्टनसी yesterday impressed me a lot क्योंकि वो अपना स्ट्राइक बॉलर तीक्षणा को as late as possible रखा गया है. So वहां पे तो इंडिया का वैसे चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं होगा. We will definitely see Jaddu and Kuldeep bowling in tandem, or if maybe Shardul coming from one end, bowling from the other and spin एक साइड से. लेकिन टॉस फैक्टर यहाँ पे जरूर होगा. लेकिन आपने यहाँ पे डाला है कि एवरेज बैटिंग फर्स्ट इज 225. इफ यू आर गिवन अ win the toss bat first kind of a scenario, and how much should be your target getting into the field before taking the field, Pakistan के खिलाफ, what should be your target? Minimum try and get to 245. Anything plus that is a bonus. I think that will be India's target. Depending on the pitch, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं पिच कैसे खेलने वाली है. We'll get to know around 230. 230 से 3 का जो फ्रेम टाइम होगा उसमें we'll get to assess the pitch. और जब तक एक दो ओवर नहीं हो जाते so we can't say. और किसी फैन ने कहा 260 मिनिमम, तो आई थिंक वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशंस. तो हम लोग जरूर आई लास्ट थिंक टाइम पहुंचे थे, लेकिन हाँ वो कोलैप्स हम लोग नहीं चाहते. हाँ एग्जैक्टली. Correct. And if you're in the bowling side, आपको पूछते, if you're in the bowling side, how much would you prefer defending, or how much would you prefer chasing? Sorry. Chasing anything around 220 to 235. Anything which goes past 240 is a worry for the chasing side, I think. Watching yesterday's game. Be it India or be it Pakistan. So you're saying this from a neutral point of view. Yes, yes. Okay, that's absolutely understood. And मैं आपके साथ definitely सहमत हूँ. लेकिन ये फैन कुछ अलग बोल रहे हैं कि under the lights batting is a bit easy as we saw yesterday. So like this fan has said, do you think that was it Bangladesh fault of playing rash shot, or was it beautiful bowling from Sri Lanka? I think a bit of both. Yes, it might get a bit easy, but Kasun Rajita was swinging it all places in the first 10 overs, and Tiksara was turning the ball, and Hassan Mahmood. If you look at that 6 o'clock to 5:30 to 6:30 period, he bowled those end overs. How did he dismiss? I think who did he It get was off the Shanaka. outside edge? Shanaka. If you look at how did he get him outside the off stump, there was a bit of a nibble. So there'll be persistent support for the fast bowlers, and I think that will stay throughout the game. So you need to see that, and I think under lights bit easy, but not too easy. But if you're giving if you're chasing, I would say if you're chasing and in front you have Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf, and Naseem Shah, and you see your openers having this kind of a score, 60 without loss, would you take it any day, any time? Oh yes, oh yes. Even if I'm close to 50 for one or 45 for one, I'll take it. Yes, any Indian fan would definitely take it because I think at this moment they are one of the best bowling attacks. And उसके बाद हम लोग आएंगे जरूर बाद में. ये हेड टू हेड है. देखते हैं, आपका Hmm. मेमोरी टेस्ट करते हैं. आप पांचों का पांचों मैच का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट बता सकते हैं? नीचे से जाते हैं. T20 वर्ल्ड कप Uh, ग्रुप स्टेज मैच दुबई पे, वेयर इंडिया लॉस्ट. व्हाट वाज दैट मोमेंट? That moment was right when the Pakistan innings started, I think, and also when Shaheen Shah Afridi took the new ball, basically. So yeah, those are the two key moments. And then going to group stage match where India won in the final over against Mohammad Nawaz. Was it the Hardik Pandya moment? Yes, basically you can say that he finished the game off really well, and it was Dubai International Stadium. You rightly said that match uh, ebbed and flowed throughout, but in the end, Hardik Pandya kept his composure. He is the underrated
underrated father of Pakistan. I mean, not father, but he's underrated performer versus Pakistan, I will say. Fantastic. And then you have the Super Fours Asia Cup. Can you tell the most important moment where India lost this game? Rohit Sharma shouting at Arshdeep Singh, basically. So that that was the moment. Absolutely. And your favorite, or I would say 140 crore people's favorite moment in the T20 World Cup, one shot. Virat Kohli out of the ground, down the ground. That will be the shot So in India is it, Pakistan games. is it the shot that made it Khasiyat, or was it the Harsha Bhogle commentary that made it Khasiyat? Both made it good, and I think that and Sachin Tendulkar. Oh my, no, no, he's from Baroda. My friend He's Hardik from Baroda, Pandya. yeah. He's not from the West Indies, so I think he got it a bit wrong. But anyways, Asia Cup group stage, palle chale, no result. Yeah, and then rain played spoil sport. So it's been good rivalry. Pakistan have actually caught up. Earlier we used to rule them. Now Pakistan, since the champion trophy, has So if you caught see, up it's really well. going at a zigzag. So it's two versus two. It's two each. It's time Hmm. for 3-2 today, and hopefully we will meet them again in the finals. But we Yeah. can see there are a lot of Hardik Pandya fans in the comment section. One says it's Hmm. from West Indies, the other says that he's going to score 100. So Woo. Hardik Pandya looked good last game He versus he he Pakistan. almost got it. He almost got it. Correct, He and almost got it. he looked good, and he loves playing against Pakistan. I would say that. लेकिन आते हैं this is the frame which either break or make it. पहले हम लोग आते हैं Hmm. पाकिस्तान का trio. This trio is definitely playing today, and they are playing Yes, together every single game. Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah with the new ball under the lights. I'm telling you, under the lights, how threatening will that be? doubly threatening rather than in the day, but any time of the day they are threatening. But India's pace trio won't be the same. If they take the bold call, I'll be the happiest person. But Mohammad Shami just replaced that with Shardul Thakur. And this would be the ideal battle. If you are talking about Asia Cup matches, these three versus these three would have been such a pure battle to watch. But India, that so-called batting depth comes in, and then what can we do? I mean, in a non-ideal, non-realistic world, we would have loved to see this, but I But don't think but we if will. but if you compare these three players each from the batting point of view, I see Shaheen Shafidi can properly bat. He can score a handy 15-20 runs, and Naseem Shah is improving in terms of his batting. When you come the other end, Jasprit Bumrah has impressed in his batting. Shami, I think, has improved, but how much can he do? But Haris Rao for Siraj एकदम same category है, बल्ले से चलता नहीं है. लेकिन still, would you take the risk of playing Shami, or would you go back to Shardul Thakur being your number eight? Again, as I said, in a non-realistic world, Shami plays, but in today's game, I see Shardul Thakur playing. You're saying Shardul Thakur play, but this fan has something else. He says, I feel Axar Patel should play today because it's if India wins the toss and choose to bowl, then the ball will grip and turn a lot. जैसे हम लोग कल देखे थे from Shakib and all. Do you see three spinners playing today? No, because why would you want to play on Pakistan's strength? Their batters are kind of used to steady, so I don't think Axar Patel gets a go anytime soon in this tournament. Forget today's match. Yeah, absolutely, and that this is something I would definitely agree to you. चलिए हम लोग जाते हैं अभी प्लेइंग 11 ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्लेइंग 11 पाकिस्तान has already announced हम इसमें लोग बात क्या करनी? हाँ ज्यादा बात इसमें करेंगे नहीं because they are announcing it a day before and this is a very settled playing 11. एक ही change from the last time they played against India is that Fahim Ashraf is back instead of Mohammad Nawaz. So वो 10 ओवर मोहम्मद नवाज जहाँ पे हम लोग 55-60 रन कोशिश करते थे अभी नहीं मिलेंगे. So Fahim Ashraf a threat for you or is it something that he will keep things quiet and जल्दी जल्दी ओवर खत्म करेंगे? Yeah. Okay. Yeah. What was the question? I'm saying that do you think that Fahim Ashraf will be a threat for Team India instead of Fahim, Mohammad Nawaz? Fahim, he drags the ball around a bit, yeah.
That's the only thing. And he's a good wicket to wicket bowler, but depends on who is set for us at that moment. So that is the main story here, main catch. Yeah, so I think this is a very good playing 11. ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे. चर्चा तो अगले वाले player slide पे करेंगे. This is the last slide. That is playing 11 of India. This is the last. This is the playing 11 which India played last time we faced Pakistan. Now comes the real question marks. Point number one: do you see Shubman Gill playing? Yes, obviously, yes, yes, he Okay. will Do you play. see Shreyas Iyer playing? Yes, Okay. Now the number five. Do you see Ishan Kishan playing? no, Do you see KL Rahul playing? yes, Do you see Shardul Thakur playing? yes. And the rest stays the same. You see Bumrah Yeah, replacing rest is Shami. the same. Yeah, yeah, rest is the same. Okay, that's I would just make one change from here. That is I would make Ishan Kishan play no matter where he plays. So this fan out here is saying a no to Shubman Gill playing out here. So he wants probably Ishan Kishan as the opener and KL Rahul at number five. But I would stick to this playing 11. No changes as such. This playing 11 I would stick to because Rohit fancies playing Shardul Thakur as number 8, adding an extra batter. And Shardul Thakur एक ट्रम्प कार्ड बन चुका है हम लोग के लिए. जब पार्टनरशिप ब्रेक करना बट आता है तो बट देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट मिक्स करने की जरूरत नहीं है. टेस्ट मैचेस में ही हैज डन रियली वेल विद द बैट. व्हाइट बॉल में इतना अच्छा नहीं किया. व्हाइट बॉल में ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. एक बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग ऑलराउंडर में बहुत फर्क होता है. बैटिंग ऑलराउंडर वो होता है जो आपको बैट के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दे सकता है, और बॉलिंग एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बॉलिंग. इधर से हम ज्यादा बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि शार्दुल ठाकुर जाके 50 मार देगा या 100 या 60 मार देगा. मार सकता है, पर मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए. शंकर सर से KL shouldn't play in a high pressure game coming back from injury. Very valid point there. absolutely I would have 101% agree to this because this is where I am bringing back the statement of Gautam Gambhir. You should look into form instead of name. And KL Rahul आप चाहते हो उसको गेम टाइम बट नॉट इन सच हाई वोल्टेज गेम. ये हम लोग के लिए हाई वोल्टेज नहीं हो सकता बिकॉज इवन इफ वी लूज एंड विन द रेस्ट टू गेम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी मेक इट इनटू द फाइनल्स बट इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. यू कैन नॉट टेक दिस गेम नहीं, लाइटली एट ऑल. पर वही तेरा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, योर पॉइंट, बिकॉज कि यही गेम है जहां हम ये सब कर सकते हैं. अगर ये गेम हम हारे, जो भी पहला मैच हार के जाते दूसरे गेम में ये करते, तो देन इट वुड हैव बीन डेडली. तो अगर कुछ करना है तो इस गेम में कर लो, बिकॉज देन यू हैव अ decent chance of next two games, huh? So yeah, that's क्या कहते हैं, that's the ideal thing. या एब्सोल्युटली एंड हम शंकर सर के साथ एकदम बिल्कुल सहमत है कि इस प्लेइंग 11 के साथ आई वुड डेफिनेटली इट्स जस्ट मी एंड यू हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज ईशान किशन plays for me and you are having KL Rahul playing, right? Yes. Okay. And now Shankar sir has one more statement. Is that give Shreyas Gill Ishan more matches. They have done well in the matches they have played in recent past. So आप सहमत है Shreyas as number 4 you're sticking with and Gill as the opener with Ishan Kishan probably as in number 5 replacing Rishabh Pant. um यार देखो, कि मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल द्रविड़ एंड रोहित आर एडमेंट ऑन गेटिंग KL राहुल इनटू द वर्ल्ड कप. उसके लिए गेम टाइम चाहिए. गेम टाइम कैसे मिलेगा? मैच खिला के. you can't if as Indian fans also we want कि KL राहुल परफॉर्म कर जाए, how we we need to give him game time. ऐसा नहीं है कि वो आते ही परफॉर्म कर देगा. हो सकता है आज उसका पहली ओवर पे डंडा उड़ जाए, हो सकता है वो 100 बना दे, बट to give, yeah, playing in a practice match is nothing compared to this. Yeah. Okay. Agreed. So you're still sticking to KL Rahul playing today's game. Is that correct? Yes. Okay, thank you so much. No problem with that. So with that, we are about to conclude this session. So we have got a few thank yous in our hand. One of the fans says, "You both have a great commanded. Thank you. Keep it up, boys. Thank you so much for joining. All of you who have done that." And another fan has also said the same. Is that these 30-minute sessions are very fun and interactive. Thank you for conducting these. Yes, we love. We Sure. both are
diehard cricket fans, and we love to have conversations with that. And it's a blessing in disguise that you fans, all of you, are definitely in the comment sections interacting with us, and we want even more. It's India versus Pakistan today. On the 12th, we have India versus Sri Lanka. Yes, that is correct. Yes. India versus Sri Lanka. So uska pehle we will definitely try and have a go at it. Tomorrow, definitely, we will have one live session. फिंगर्स क्रॉस हम लोग का मूड अच्छा रहना चाहिए आज की एंड ऑफ डे की तरह एंड the fan says that Ashwin was all praise of Ishan Kishan in his video. I really like Ashwin. वो बहुत ही समझदार बात करते हैं Ashwin. Despite him being not involved in the World Cup squad, he's saying that it's time to remove the conflicts and back these boys for the upcoming 2.5 months. Yeah. So, do you think that that extra left-handed batsman is important for Team India because we do not have apart from Jaddu? अगर आज नवाज खेल रहा होता तो मैं बोलता हाँ, शदाब खेल रहा है तो शायद से ये राइटी भी चलेगा, क्योंकि इफ्तिकार है, अंदर बॉल लेके आता है, आगा सलमान ऑफी है और शदाब खान गूगली अच्छी करता है, तो मैचअप पे देखे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ईशान किशन शुड प्ले. बाकी अगेन वी ऑल विल गेट टू नो at 2:30. Yep. And last question before we end the show is that do you see Sky playing? Not today, but in the tournament? I don't think so, yaar. Mandal, sorry to ruin your hopes, buddy, but not even in the tournament. Forget playing 11. That is reality. I'm not demeaning Sky in any way. I love this guy. Only when I don't love him when he performs against Punjab Kings. Otherwise, I really love that guy, and he's a gem of a talent. But right now, he's an X factor. He's an X factor. Yes. Definitely, and he's very good. And Shankar sir also wishes the same. Keep up the good work, Peter Mararian. Thank you so much, Shankar sir, for joining. And hope to have more such conversations. So before we end, Aryan, आपका predictions highest run getter for today? Shreyas Iyer for today for me. From India, from Pakistan, Imamul Haq. Okay, and I will stick with Imamul Haq because मेरे को थोड़ा उससे डर है. And for India, I would go with Captain Rohit Sharma today. Captain Rohit Sharma performing well because I don't want to go behind my idol Virat Kohli. उसको छोड़ दो, उसको खेलने दो जैसे मर्जी. I'll go with Rohit Sharma. And wicket takers for both the sides? देखो, मैं पिछले 2 वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि गलती से नहीं, मैंने बोल दिया था कि शाहिद शाह अफरीदी और वो चल गया था, तो आज मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शाहीन आके हमारे डंडे उड़ा दे. तो फॉर पाकिस्तान आई से शादाब खान, क्योंकि चलो स्पिनर पे 1-2 आउट हो भी जाए तो दुख नहीं लगेगा. और इंडिया के लिए जी, जिस हिसाब से बुमराह नेट में फोड़ रहा है और जिस हिसाब से वो तेज बॉल डाल रहा है, अपने वालों को नहीं छोड़ रहा, तो आई होप कि पाकिस्तान वालों को भी ना छोड़े और आज विकेट लेके मतलब he just tears apart Pakistan, tears the top order apart, and we see the stumps start revealing. So go just see. Okay, so I'll stick to Bumrah because मेरे को भी ये कि he has brought a good news from Mumbai, so I think he's going to continue with that. और पाकिस्तान के खिलाफ I think probably नसीम शाह अभी तक टूर्नामेंट में वैसे चली नहीं, लेकिन आपका हिसाब से हारिस राउफ को वो जो सेंड ऑफ था ईशान किशान का, उसका बदला कौन लेगा? सिराज लेगा? वो सब किंग ने देख लिया. अगर किंग का मूड हुआ तो वो बदला ले लेंगे. किंग सॉ ऑल ऑफ दैट. तो बाकी अगर सिराज को छक्का वगैरह पड़ गया 1-2 तो उसने he'll get turned on. He just needs that catalyst to bring the fire. और against नेपाल he got turned on क्योंकि आसिफ शेख ने उसको स्क्वायर लेग पे छक्का ठोक दिया था. तो Siraj and Haris Rauf, I want to see them stare in the batter's eyes and go aggressive. क्योंकि जैसे वो शोएब अख्तर से शैतानी करो, we want to see some. I am not saying fight or below the belt anything. We want to see that old India Pakistan clash today and someone to rile up. So yeah, we want to see that. Bilkul. And lastly, before we end the session, do you see India winning and how big or small? India win
if they are chasing by 5 or 4 wickets. If they are defending, um, 30 to 40 runs. Okay, I think India will win by some hefty margin. If batting first, then 40 plus runs, and if chasing, then chasing it by 5 wickets to spread. I think मेरे हिसाब से. Okay, and thank you so much, Priyam, also for writing the same. Hope you join the upcoming sessions too. With that, let's conclude the session. आर्यन आप conclude कर सकते हैं हम लोग का live session. कंक्लूजन की बात यह है भैया कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, जो मुझे कमेंट पढ़ के लगता है कि अच्छा ही लगा, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो घंटी बजा दो, और नीचे इंडिया को बेस्ट विशेस दे दो कमेंट्स में, क्योंकि इंडिया को सारी यूनिवर्स की ताकतें चाहिए आज मैच जीतने के लिए, बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट श्रीलंका, वी डोंट केयर अबाउट बांग्लादेश, उस मैच में जो होता है होना रहे, वी केयर अबाउट टुडे। आज अगर नहीं जीतते खुदा ना खास्ता तो नींद नहीं आएगी। तो अगर आपको अच्छी बिल्कुल. नींद चाहिए, तो अगर अच्छी नींद चाहिए तो ये चैनल को शेयर कर दो, और इंडिया को जिता दो। पाकिस्तान को ऑल द बेस्ट, नो हार्ड फीलिंग्स आपके लिए, पर देखो इंडिया का हो या भारत को जीतना नीली वाली दस्ती को ही है। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और देखिए एक बार फिर मैं आपको सूरज दिखा दूं, मेरे मुंह पे सूरज दिख रहा है, तो गुड न्यूज है। और जितने भी लोग जुड़े थे धन्यवाद। पोस्ट मैच अगर जीत गए तो हम जरूर आएंगे, थोड़ी देर के लिए कोशिश हमारी रहेगी हम आए। और अगर नहीं भी जीते तो भी आएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर बायस, नॉट बायस टुवर्ड्स इंडिया, बट अगेन द शो मस्ट कैरी ऑन। सो thank you very much, and see you on the other side. Thank you so much,